गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज शुरू करेंगे। समरी ऑफ एनर्जी सिस्टम्स। Okay, here is the table you can refer to for all that we have discussed on energy system. Energy system, energy production, aerobic, energy production unlimited, anaerobic, energy production limited, energy production glycogen lactic acid system limited, and ATP CP system very limited. Energy system fuel used aerobic, carbohydrate, fat, protein in this order. Anaerobic, glycogen lactic acid system and ATP system. Glycogen lactic acid system, carbohydrate as glycogen, and ATP CP system, ATP CP glycogen fuel used. Also energy system aerobic can consume lactic acid, anaerobic lactic system, glycogen lactic system produces lactic acid and creatine phosphate. ATP CP system consumes CP. Afterburn energy system, afterburn in aerobic very little, anaerobic high, glycogen acid system high, and ATP CP system high. Microfiber type energy system, aerobic type 1, anaerobic type 2, glycogen lactic acid system type 2A, and ATP CP system type 2B. Contraction ability energy system, aerobic is very slow, anaerobic is glycogen lactic acid system is very fast, and ATP CP system is very fast. Energy system, mitochondria density and myoglobin, anaerobic is very high, aerobic is very high, anaerobic is glycogen lactic acid system is medium, and ATP CP system is low. Activity energy system activity, aerobic is long term acrobic, anaerobic is long term anaerobic and short burst of anaerobic acidity. Energy system in duration, aerobic is endless hours together, anaerobic lasts for maximum 1 to 3 minutes, the glycogen lactic acid system, and ATP CP system is less than 30 seconds. Energy system example in sports, aerobic is marathon, anaerobic is middle distance running up to 100 meters, glycogen lactic acid. ATP CP system sprints.
Energy system examples. Energy system examples of activity more relevant for me. Aerobic is cardio or endurance training. Anaerobic is glycogen acid system, interval training, weight training, sports at competitive level. And ATP system is power training or heavy weight training, sprint training or jumps. So now I want to remember only what I have marked in bold, because that is what is relevant to us. To the choices of exercise we make, to the kind of fuel we want to burn, to the way we want to look. The only reason why I put some more info than what is immediately relevant is because these factors are important and lead us to relevant points. There is another table, performance time and dominance energy systems. Here is a quick reference table which shows the energy systems involved in various activities, exercise based on their performance time. Performance time less than 30 seconds, less than 30 seconds. Major energy system involved is ATP, CP. Examples, shot put, 100-meter sprint, tennis swings. 30 to 90 seconds, ATP, CP and lactic acid. That is 400-meter sprint, 100-meter swing. Performance time. Performance time 90 seconds to 3 minutes. That is lactic acid and aerobic. That is 800-meter run, gymnastics, boxing and wrestling. More than 3 minutes is aerobic. That is marathon, jogging, long swims. Table of various sports, competitive and percentage contribution of energy system. Basketball, ATP, CP is 85, lactic acid 15, aerobic is none. Hockey, ATP, CP is 60, lactic acid 20, aerobic is 20. Golf swing, ATP, CP 95, lactic acid 5. Gymnastic, ATP, CP 90, lactic acid 10, aerobic none. Tennis, ATP, CP 70, lactic acid 20, aerobic 10. Recreational sports, tennis, squash, frisbee, basketball, badminton, cricket, etc. When we play in clubs, society and mohalla, ATP, CP is none, lactic acid 5 and aerobic is 95. Energy system and exercise myths. Okay, let's quickly summarize what we learned in an energy system above. Number one is different exercises or types of activities use different types of muscle fibers and fuel. All type of muscle fibers must be put to use if you want to look and feel fit. Number three is while aerobic exercises can use fat as fuel, while exercising, in addition to carbs and proteins, anaerobic activities can burn fat for as long as 48 hours after exercise, called afterburn. So most injuries, fads, and experiments with exercise come out of boredom, overtraining, which in turn can be attributed to bad workout planning, which in turn stems from no understanding of the energy system of the body. Basically, if you understand energy systems, you can stop yourself doing silly things with your exercise routine. No understanding of energy system, that will lead to bad workout planning, that will lead to fads and injuries. Let's look at some common myths once again and understand them from the energy system perspective. Sweating
more for more fat loss. You can now see that sweating is not the same as fat melting. It is only about the heat generated during any type of activity. And aerobic activity produces heat proportional to oxygen consumed. So you are likely to sweat more during aerobic type activities, but because it comes with little or less afterburn as compared to anaerobic activities, it is going to mean less fat burning. Creating conditions where you sweat in excess basically reduces your ability to exercise or burn calories at its optimum. So working out without an AC or with all the windows closed and fan switched off, wearing a hood over your head while running, wearing dark, tight clothes, choosing yoga classes or any workout based on which allows you to sweat more are all practices that need to be abandoned right away because these are counterproductive to not just the body's fat burning abilities but also to all the fitness parameters. Spot reduction, many reps for one body part. For example, leg lifts to reduce the outer thigh and crunches for a flat stomach. When you are able to lift anything for 15 reps and more, it is in the aerobic zone. Now the crunch and leg lift and the doggy and whatever you do, you can do 20, who knows 50, even 200 reps per set. What energy system have you employed? Aerobic. What fuel have you used? Glycogen, fat and protein. And in that order. So have you burned fat on top of the thigh or stomach? No. You have burned free fatty acids from the bloodstream and much more than that. You have burned the glycogen stores, of course, accompanied by jarring of joints and overuse of the muscle in use. And will there be a surge in the FFA utilization post exercise? No, because this exercise is not going to give you afterburn. And what is worth remembering is that the body has an inherent wisdom, a code almost, which decides from what body part the FFA will be mobilized. Based on lifestyle, eating habits, and workout intensity, it is no surprise that people who punish their stubborn fat areas see least reduction in those body parts. That is because of the poor intensity of exercise, no utilization of anaerobic pathway, no afterburn, and no essential fat in the diet. Invariably, those who believe that spot reduction is possible are the ones who also avoid ghee and coconut in their diet. More and more research is proving that your grandmom always knew coconut leads to a slimmer waist and ghee will ensure mobilization of fat from stubborn areas. Basically, give you a nice proportionate figure. So other than these two miracles, there is no miracle exercise procedure talk for those stubborn spots. चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। कल डॉक्टर साहब ने कुछ बोले थे कि थोड़ा सा पार्ट कल भी रह गया था, आज थोड़ा उसका ऊपर चर्चा करेंगे। सो हमारे साथ डॉक्टर साहब है, ओवर टू डॉक्टर रमेश मिश्रा। गुड मॉर्निंग फाइनल। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। हमारा ये जो एक्सरसाइज के बारे में चर्चा, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छा है। हमारा नॉलेज बढ़ता है और रुजुता जी हमको सिखाते जा रहे हैं। तो आइए पहले डिस्कस करेंगे अगले दिन का जो पार्ट रह गया था इसके बारे में।
वो समरी में क्या बोले थे? ये बोले थे कि so what you need to remember is that for anaerobic pathways, restored ATP and glycogen are the only sources of fuel. For the aerobic pathways, all three, that is carbs, fats and protein. आज भी वही टेबल में दिखा दिए। एरोबिक में हमको पहले कार्बोहाइड्रेट जरूरी है एरोबिक एक्सरसाइज के एनर्जी के लिए, और इसके बाद यूटिलाइज होता है फैट, प्रोटीन रेयरली यूटिलाइज होता है। जब हम ज्यादातर फास्टिंग में रहेंगे तब प्रोटीन यूज में आएगा। तो क्या होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज खत्म हो जाता है, लीवर से ग्लाइकोजन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसके बाद एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद पाली आता है, वो टर्म आता है फैट का, फैट भी बर्न होना शुरू हो जाता है। एरोबिक में सबसे लास्ट में प्रोटीन आता है। लेकिन एनाएरोबिक में क्या होता है, जो स्टोरेज होता है मसल में ग्लाइकोजन और सीपी, ये यूटिलाइज होते हैं। तो प्री स्टोर्ड एटीपी एंड ग्लाइकोजन ये सब यूटिलाइज होते हैं एनाएरोबिक में। और दूसरा है मिराकल ऑफ आफ्टर बर्न में क्या बोले, मिराकल ऑफ आफ्टर बर्न में बोले ज्यादा एनर्जी कंजप्शन कब होता है, ज्यादा फैट यूटिलाइजेशन कब होता है, वो 24 घंटे बाद 48 घंटे के बीच में जो रिपेयर वर्क होता है तब ज्यादा फैट यूटिलाइजेशन होता है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हो गया हमारा एनाएरोबिक सिस्टम में, एक्सरसाइज तो हो गया लेकिन जो टीयर हुआ, वियर हुआ, ये वियर एंड टीयर का रिपेयर के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आता है, ये आता है ज्यादा प्रोटीन से आता है, इसके बाद कार्ब से आता है, इसके बाद लास्ट में फैट से भी आता है। तो ये फैट गलना कब शुरू होता है, जब हम ज्यादा एनाएरोबिक एक्सरसाइज करेंगे और ये आफ्टर बर्न में ये फैट गलना शुरू होगा। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी क्या है, एनाएरोबिक एक्सरसाइज ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आफ्टर बर्न में ये हमारा बेनिफिट ज्यादा हमको मिलता है। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में जो कैलोरीज यूज होता है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही यूज होता है। तो ये कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन के साथ वो कार्बोहाइड्रेट का बर्निंग से आता है। तो पोस्ट एक्सरसाइज में क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड सिस्टम और जो सीपी सिस्टम, ये दोनों आफ्टर बर्न में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो फैट से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और ग्लूकोज का स्टोरेज पहले खत्म होता है, इसके बाद आता है फैट। तो इसके बाद आज जो डिस्कस हो रहा है ये टेबल के रूप में दे दिए। हमारा जो गलत अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी था ये सब क्लियर हो गया है टेबल के जरिए। और लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जो हमारा गलत फहमी था कि ज्यादा स्वेटिंग का मतलब ज्यादा फैट लॉस, ये गलत है। ज्यादा स्वेटिंग का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन और ज्यादा ग्लाइकोजन का यूटिलाइजेशन। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, एटीपी निकलता है और लैक्टिक एसिड।
स्पॉट रिडक्शन में ये भी एक गलतफहमी है कि क्या है कि स्पॉट रिडक्शन के जरिए हम बेली का फैट के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे जिसके जरिए बेली का फैट गलेगा। बतख का फैट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे, इसके जरिए बतख का फैट गलेगा। वेस्ट के लिए दूसरा एक्सरसाइज है, ये एक गलतफहमी है, ये इसके जरिए कभी होता नहीं। फैट गलना शुरू होगा तो वो होल बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज का टाइम लिमिट इसके ऊपर डिपेंड करता है, और वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। वेराइटी क्या होता है? ये वेराइटी होता है हमको ज्यादा एनारोबिक एक्सरसाइज करना पड़ता है। एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे, कम ड्यूरेशन होना सही, इसको बार बार करेंगे। जैसे वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग के बाद और जिम्नास्टिक्स में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब के जरिए क्या होता है? एनारोबिक एक्सरसाइज ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा स्पेल में होता नहीं और ज्यादा स्वेटिंग में होता नहीं। फैट गलने के लिए हमको रोज करना पड़ता है। हम रोज करेंगे, एनारोबिक एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, इसके साथ एरोबिक भी करेंगे। एरोबिक नहीं करने से होगा नहीं, एरोबिक भी करेंगे और एनारोबिक भी करेंगे। ये दोनों करेंगे और हमारा फैट को गलने में मदद देंगे। बॉडी में अपना विजडम है, बॉडी का अपना विजडम है। बॉडी को मालूम है कहाँ से फैट को निकालना और किस तरह का वो स्टोरेज को खत्म करना। पहले तो हमको एक्सरसाइज के माफिक स्टोरेज खत्म करने के लिए बॉडी सोचता है। हम रनिंग में जाते हैं तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है और यूटिलाइज होता है। एंड्योरेंस में जाएंगे, ज्यादा टाइम रनिंग करेंगे तो ये लीवर से ग्लाइकोजन को निकालेगा, इसको भी यूटिलाइज करेगा। और इसके बाद जब वेट ट्रेनिंग में जाएंगे, वेट लिफ्टिंग, थ्रस्टिंग, थ्रोइंग, ये सब ट्रेनिंग में जाएंगे तो क्या करेगा? एक्सरसाइज के टाइम तो ज्यादा यूटिलाइजेशन होता नहीं एनर्जी, बाद में होता है। तो बाद में रिपेयर वर्क के लिए वो फैट का गलना शुरू होगा और प्रोटीन का यूटिलाइजेशन भी होगा। ये सब होगा। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन रिपेयर के लिए होगा, लेकिन एनर्जी के लिए फैट का गलना शुरू होगा। तो इसीलिए हमारा जो एनारोबिक एक्सरसाइज है उसको भी थोड़ा बहुत करना है और एरोबिक के साथ ही करना। स्वेटिंग एक इंडिकेटर नहीं है और ये स्पॉट रिडक्शन भी एक ही हमारे लिए यूटिलाइज्ड एक्सरसाइज नहीं। तो ये सब के साथ हम आज ये डिस्कशन खत्म करते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे। और जो टेबल दिया गया है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये टेबल को फॉलो कीजिए, बार बार फॉलो कीजिए और मेमोराइज कीजिए। इससे हमारा डाउट और भी क्लैरिफाइड हो जाएगा और हम पूरी तरह से हम इसको समझ पाएंगे। थैंक यू ऑल। आज के लिए सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे और कल आने के लिए आपको वेलकम करता हूँ।